अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डीएसपी की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं हम्माद अली। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सिस्टम्स। आज हम सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सिस्टम को डिस्कस किया था, लेकिन आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम और प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम्स या हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सिस्टम की बेसिक्स या आसान सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिस्टम्स दे प्रोसेस सिग्नल्स टू क्रिएट अदर सिग्नल्स। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सिग्नल्स. For instance, x of n, it's an input. To achieve an output y of n, it has to be passed through a system. Now today we will discuss the following equation. X of n is equal to summation k is equal to minus infinity to infinity x of k into delta of n minus k. We will discuss this equation in detail. Now coming on to the types of systems. सबसे पहले सीरियल सिस्टम में there are more than one systems that are arranged in a series, as you can see in this example, and similar technique is used, that is an input is passed through these systems that are arranged in series to obtain the output. Now coming on to the next type, और ये है parallel system. इसमें systems को एक दूसरे के पैरेलल में अरेंज किया होता है and the input is passed through these two parallel systems to obtain the output, that is y of n. Now coming on to the third type, that is the feedback system. First of all, feedback का definition मैं आपको बताता हूँ. Feedback system is the one in which the part of output is fed back into the input to enhance the output. इसमें आप देख सकते हैं x of n, it is passed through a system and to obtain the output y of n, and the part of output is again fed back into the input. तो ये हो गया आपके three types of systems: serial system, parallel system and the feedback system. Now coming on to the next topic, that is the properties of systems. First of all, causal system. Causal system is the one that depends on the current and the previous values. For instance, y of n is equal to x of n minus 2 x of n minus 1. Now as you can see, it is depending on the current value as well as the previous value. So this will be known as the causal system. Now coming on to the next property, that is the non-causal system. Non-causal system depends on the future values only. As you can see, the system y of n is equal to x of n plus 3. Here it is depending on the future value. So this is known as the non-causal system. Now coming on to the next property, that is the linearity. Linearity को satisfy करने के लिए एक system को additive भी होना चाहिए और homogeneous भी होना चाहिए. सबसे पहले अगर हम लोग देखें additive property, तो उसमें एक input है, let's suppose x1 of n, it is giving us an output y1 of n, and another input x2 of n is giving us an output y2 of n. Now the sum of these individual inputs must be equal to the sum of the individual outputs. If it is equal, so then the system would be additive. तो एक property satisfy हो जाएगी linear system की. Now coming on to the next property, that is homogeneity. For instance, look at the input x of n is giving us an output y of n. अगर हम लोग एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें इस इनपुट के साथ, तो वही चेंज आना चाहिए आउटपुट में भी. हियर यू कैन सी कि बीटा को अगर हम इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही चेंज आउटपुट में भी आना चाहिए. तो होमोजेनिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. एंड इफ़ दीज टू प्रॉपर्टीज़ आर सेटिस्फाइड, तो वो सिस्टम आपका लीनियर सिस्टम कहलाएगा. लीनियर सिस्टम को डिस्कस करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स को. फॉर इंस्टेंस, ये आपके पास एक सिग्नल है x ऑफ n, इट इज़ गिविंग अस एन आउटपुट y ऑफ n आफ्टर पासिंग थ्रू अ सिस्टम. अब अगर हम लोग इसमें डिले लेके आते हैं इनपुट में, और वही डिले अगर आउटपुट में भी आता है, तो वो सिग्नल आपके पास टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहलाएगा. अदरवाइज़ वो टाइम वेरिएंट सिग्नल होगा. फॉर इंस्टेंस, ये आपके पास एक सिग्नल है y ऑफ n इज़ इक्वल टू x ऑफ n प्लस 3. Now let z of n is equal to x of n minus n naught.
Here z of n becomes z of n plus 3. अब हमने इस इक्वेशन में z of n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सो इट बिकम्स x of n माइनस n नॉट प्लस 3. तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने डिले इनपुट में दिया वही डिले आउटपुट में भी आ रहा है. तो ये सिग्नल आपके पास टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा. Now we will discuss this fundamental equation that we used in the start of the lecture. Y of n is equal to x of n into h of n. This sign doesn't mean multiplication, it means convolution. It means that x of n is being convolved with h of n. Now if you are given a signal y of n that is equal to x of n minus 2, x of n minus 1 plus 3, x of n minus 2, and you are given these inputs, that is at x is equal to 0, 1 and 2, y is equal to 1, and you are asked to find the impulse response. Impulse response means that you are giving an impulse input, that is at x is equal to 0 the value of y is equal to 1. This is known as the impulse input. Now we will obtain the values of y at different points by using this equation and this graph. तो ये ग्राफ और इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने वैल्यूज़ प्लग इन करनी है और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर. सिमिलरली h ऑफ n की वैल्यूज़ आप लोग फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में पुट करके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर और इस ग्राफ को यूज़ करते हुए, क्योंकि सिंस इट इज़ एन इम्पल्स रिस्पॉन्स तो इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 पे 1 होता है, बाकी सब वैल्यूज़ पे 0 होगा. तो आपने इस ग्राफ को और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए h ऑफ n की वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर लिया. h ऑफ n की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ को राइट डाउन कर लेंगे. नाउ इन दिस स्टेप h ऑफ n इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 एंड 3. वी विल मल्टीप्लाई 1 बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ h ऑफ n. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट फ्रॉम वेयर डज दिस 1 कम. लेट्स सी द गिवन ओरिजिनल ग्राफ. At x is equal to 0 the value of y is equal to 1, so we will multiply 1 by the components of h of n. Similarly in the next step we will again multiply 1 with the components of h of n, but this time around we will add a 0 in it. This one also comes from this point at x is equal to 1, the value of y is equal to 1. Similarly in the next step we will again multiply the h of n components with this one, and in the next step the rest of the values would be 0 as you can see from this graph. So after obtaining the values of h of n and x of n you will be able to find y of n. That's it from today's video.